Access your free language gifts right now before they expire. First, the Talking About Dates PDF Conversation Cheat Sheet. Learn how to talk about your plans on specific dates in the target language. Plus, must-know vocabulary for months, days of the month, and more. Download this cheat sheet for free. Second, the Ultimate Guide to Beginner Language ebook. Want a free way to boost your vocabulary? With this new PDF ebook, you'll master over 500 beginner words and phrases, more than enough to start speaking the language with confidence. Third, how do you say winter in your target language? Don't know? Access this 1-minute lesson to learn all winter-related words and phrases. If you want to learn these words fast, use the free audio slideshow tool inside the lesson. Fourth, do you know how to express holiday greetings in your target language? Access this 1-minute lesson to learn phrases like Happy Holidays and Have a Happy New Year. Fifth, can you talk about holiday accommodations in your target language? Learn how to say hotel, guest house, inn, and much more with this quick vocab bonus. And sixth, want an app that teaches you the language through conversations? Download Innovative Language Learning for free for the Android, iPhone, and iPad. You'll unlock bite-sized lessons that teach you practical conversations and get you speaking in minutes. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Hindi. Hi everybody, my name is Akansha. Welcome to the 800 Core Hindi Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hindi. But there's a twist. With each new lessons in the series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hindipod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Hindi. Okay, let's get started. First is conditioner. 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 एक अच्छा कंडीशनर आपके बालों से उलझने निकाल देगा. A good conditioner will take the tangles out of your hair. एक अच्छा कंडीशनर आपके बालों से उलझने निकाल देगा. Deodorant. 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 उसने एक नया डिओडोरेंट खरीदा है. He bought a new deodorant. उसने एक नया डिओडोरेंट खरीदा है. लिक्विड साबुन. लिक्विड सोप. लिक्विड साबुन. लिक्विड साबुन. लिक्विड सोप. लिक्विड साबुन नल के पास रखा है. The liquid soap is placed next to the faucet. लिक्विड साबुन नल के पास रखा है. बतख. डक. बतख. बतख. डक. बतख पानी में गोते लगा रही है. The ducks are bobbing in the water. बतख पानी में गोते लगा रही है. कौवा. Crow. कौवा. कौवा. Crow. कौवे सबसे होशियार पंछियों में से एक हैं. Crows are among the smartest birds. कौवे सबसे होशियार पंछियों में से एक हैं. तिलचट्टा. Cockroach. तिलचट्टा. तिलचट्टा.
चट्टा, कॉकरोच। तिलचट्टों से सबको नफरत होती है। Cockroaches are hated by everyone. तिलचट्टों से सबको नफरत होती है। मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर, मच्छर, मॉस्किटो। मच्छरों को भगाने के लिए ये कुछ उपाय है। Here are some tips for getting rid of mosquitoes. मच्छरों को भगाने के लिए ये कुछ उपाय हैं। निर्माण मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर, निर्माण मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। निर्माण मजदूर लकड़ी को नाप रहा है। The construction worker is measuring wood. निर्माण मजदूर लकड़ी को नाप रहा है। गृहिणी, homemaker, गृहिणी, गृहिणी, homemaker। गृहिणी सबसे ज्यादा मेहनत से काम करती है। A homemaker works the hardest of all. गृहिणी सबसे ज्यादा मेहनत से काम करती है। बर्फ, आइस, बर्फ, बर्फ, आइस। डल झील सर्दियों में बर्फ में बदल जाती है। The lake turns to ice in the winter. डल झील सर्दियों में बर्फ में बदल जाती है। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास, हिस्ट्री। उसके बेटे ने आधुनिक इतिहास में विशेषज्ञता प्राप्त की है। His son has specialized in modern history. उसके बेटे ने आधुनिक इतिहास में विशेषज्ञता प्राप्त की है। भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल, ज्योग्राफी। उसने भूगोल में मेजर और मनोविज्ञान में माइनर किया है। He is a geography major with a minor in psychology. उसने भूगोल में मेजर और मनोविज्ञान में माइनर किया है। दुकान, स्टोर, दुकान, दुकान, स्टोर। इस दुकान के सभी कर्मचारियों ने नीले रंग की वर्दी पहनी है। All the attendants in the store are dressed in blue uniforms. इस दुकान के सभी कर्मचारियों ने नीले रंग की वर्दी पहनी है। बाजार, मार्केट, बाजार, बाजार, मार्केट। आजकल बाजार में भारी छूट चल रही है। There are heavy discounts in the market these days. आजकल बाजार में भारी छूट चल रही है। कीमत, प्राइस, कीमत, कीमत, प्राइस। सेल्स एजेंट को बाजार में बढ़ती कीमतों से डर था। The sales agent was afraid of the rising market prices. सेल्स एजेंट को बाजार में बढ़ती कीमतों से डर था। कूपन, 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 कूपन।
चूंकि आपके पास छूट का वैध कूपन है, हम आपसे केवल आधी कीमत लेंगे. As you have a valid discount coupon, we will only charge you half the price. चूंकि आपके पास छूट का वैध कूपन है, हम आपसे केवल आधी कीमत लेंगे. गलियारा, aisle. गलियारा, गलियारा, aisle. मैं गलियारे के पास की सीट पसंद करूंगा. I prefer an aisle seat. मैं गलियारे के पास की सीट पसंद करूंगा. बैग, 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 बैग. मेरा बैग बहुत भारी है. My bag is too heavy. मेरा बैग बहुत भारी है. फोटोग्राफ, 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 फोटोग्राफर, फोटोग्राफ. यह फोटोग्राफ अच्छी नहीं दिख रही है. This photograph doesn't look good. यह फोटोग्राफ अच्छी नहीं दिख रही है. सोडा, 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 सोडा. सोडा में बहुत शक्कर होती है. Soda contains a lot of sugar. सोडा में बहुत शक्कर होती है. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hindipod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Alvida. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Hindi. Hi everybody, my name is Akansha. Welcome to the 800 Core Hindi Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hindi. But there's a twist. With each new lessons in the series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hindipod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Hindi. Okay, let's get started. First is Nawa, ninth. Nawa, Nawa, ninth. इस्लामी वर्ष में रमजान का महीना 9वां होता है. Ramadan is the 9th month of the Muslim year. इस्लामी वर्ष में रमजान का महीना 9वां होता है. 10वां, 10th. 10वां, 10वां, 10th. 10वें जिले में एक चीनी बाजार है. There is a Chinese market in the 10th district. 10वें जिले में एक चीनी बाजार है. 8वां, 8th. 8वां, 8वां, 8th. मुझे मेरे 8वें जन्मदिन पर एक नई साइकिल दी गई थी. I was given a new bicycle for my 8th birthday. मुझे मेरे 8वें जन्मदिन पर एक नई साइकिल दी गई थी. उस्तरा, shaving razor.
उस्तरा, उस्तरा। शेविंग रेजर, एक इस्तेमाल के बाद फेंकने वाला उस्तरा। डिस्पोजेबल शेविंग रेजर, एक इस्तेमाल के बाद फेंकने वाला उस्तरा। वॉश क्लॉथ, वॉश क्लॉथ, वॉश क्लॉथ, वॉश क्लॉथ, वॉश क्लॉथ। लड़का अपना मुंह वॉश क्लॉथ से धो रहा है। The boy is washing his face with a washcloth. लड़का अपना मुंह वॉश क्लॉथ से धो रहा है। तौलिया, टॉवल, तौलिया, तौलिया, टॉवल। मेरा तौलिया कहाँ है? Where is my towel? मेरा तौलिया कहाँ है? चम्मच, स्पून, चम्मच, चम्मच, स्पून। कांटा, चम्मच और चाकू खाना खाने के बर्तन हैं। Forks, spoons and knives are eating utensils. कांटा, चम्मच और चाकू खाना खाने के बर्तन हैं। कांटा, fork, कांटा, 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 fork। कांटा गंदी थाली पर रखा है। The fork is on the dirty plate. कांटा गंदी थाली पर रखा है। चाकू, नाइफ, चाकू, चाकू, नाइफ। क्या आप मुझे चाकू दे सकते हैं? Could you pass me the knife? क्या आप मुझे चाकू दे सकते हैं? थाली, प्लेट, थाली, थाली, प्लेट। वह थाली साफ नहीं है। That plate is not clean. वह थाली साफ नहीं है। मधुमक्खी, बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, बी। मैंने अपने घर के पास मधुमक्खी का एक विशाल छत्ता देखा है। I saw a huge beehive near my house. मैंने अपने घर के पास मधुमक्खी का एक विशाल छत्ता देखा। चींटी, एंट, चींटी, चींटी, एंट। वैज्ञानिक चींटियों को ढूंढने लगा। The scientists search for the ants. वैज्ञानिक चींटियों को ढूंढने लगा। सांप, स्नेक, सांप, सांप, स्नेक। उस जंगल में बहुत सांप हैं। That jungle has a lot of snakes. उस जंगल में बहुत सांप हैं। दूध, मिल्क, दूध, दूध, मिल्क। अपना दूध जल्दी पी लो। Drink your milk quickly. अपना दूध जल्दी पी लो। डिजाइनर, डिजाइनर, डिजाइनर,
डिजाइनर, डिजाइनर। वह पेशे से डिजाइनर है। He is a designer by profession. वह पेशे से डिजाइनर है। कलाकार, आर्टिस्ट, कलाकार, कलाकार, आर्टिस्ट। मेरा भाई रंगमंच कलाकार है। My brother is a stage play artist. मेरा भाई रंगमंच कलाकार है। सैनिक, सोल्जर, सैनिक, सैनिक, सोल्जर। सैनिकों ने देश की रक्षा की। Soldiers protected their nation. सैनिकों ने देश की रक्षा की। उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति, उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर। उद्योगपति अपने विचारों से दुनिया बदल देते हैं। Entrepreneurs change the world with their ideas. उद्योगपति अपने विचारों से दुनिया बदल देते हैं। लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी। मैं सिर्फ लघु कथाएं पढ़ता हूं। I only read short stories. मैं सिर्फ लघु कथाएं पढ़ता हूं। फोल्डर, 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 फोल्डर। मैंने दस्तावेज एक फोल्डर में रख दिए। I put the documents in a folder. मैंने दस्तावेज एक फोल्डर में रख दिए। Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hindipod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Alvida. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Hindi. Hi everybody, my name is Akansha. Welcome to the 800 Core Hindi Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hindi. But there's a twist. With each new lessons in the series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hindipod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Hindi. Okay, let's get started. First is frying pan. Frying pan, frying pan, frying pan, frying pan. कृपया frying pan में कुछ सब्जियां डालें. Please put some vegetables in the frying pan. कृपया frying pan में कुछ सब्जियां डालें. Cutting board, cutting board, cutting board, cutting board, cutting board. बावर्ची कटिंग बोर्ड पर उबला हुआ अंडा काट रहा है. The cook is cutting a hard-boiled egg on the cutting board. बावर्ची कटिंग बोर्ड पर उबला हुआ अंडा काट रहा है. Basin, sink, basin,
बेसिन, सिंक। व्यक्ति बेसिन को रगड़कर साफ कर रहा है। The person is scrubbing the sink. व्यक्ति बेसिन को रगड़कर साफ कर रहा है। कटोरी, बाउल, कटोरी, कटोरी, बाउल। कटोरी खाली है। The bowl is empty. कटोरी खाली है। निकास, एग्जिट, निकास, निकास, एग्जिट। निकास द्वार कहाँ है? Where is the exit? निकास द्वार कहाँ है? मानचित्र, मैप, मानचित्र, मानचित्र, मैप। दुनिया का मानचित्र यात्रा के लिए मददगार होता है। A world map is helpful for travel. दुनिया का मानचित्र यात्रा के लिए मददगार होता है। सूटकेस, 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 सूटकेस। अपने सूटकेस में कीमती चीजें नहीं छोड़ना। Do not leave valuables in your suitcase. अपने सूटकेस में कीमती चीजें नहीं छोड़ना। पर्यटक, टूरिस्ट, पर्यटक, पर्यटक, टूरिस्ट। दुनिया में गजब के पर्यटक स्थल हैं। There are amazing tourist spots in the world. दुनिया में गजब के पर्यटक स्थल हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति, राजनीति, पॉलिटिक्स। मेरी राजनीति में रुचि नहीं है। I don't have any interest in politics. मेरी राजनीति में रुचि नहीं है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान जीवों के अध्ययन का विषय है। Biology is the study of living organisms. जीव विज्ञान जीवों के अध्ययन का विषय है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। मेरे पास रसायन विज्ञान में स्नातक उपाधि है। I have a graduate degree in chemistry. मेरे पास रसायन विज्ञान में स्नातक उपाधि है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। मुझे भौतिक विज्ञान के मूल तत्व पता हैं। I know the basics of physics. मुझे भौतिक विज्ञान के मूल तत्व पता हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम बहुत अच्छे हैं।
In this university, the economics courses are excellent. इस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम बहुत अच्छे हैं. रखना, put, रखना, रखना, put. मुझे समुद्र किनारे गीली रेत पर पांव रखना अच्छा लगता है. I like putting my feet in the wet sand at the seashore. मुझे समुद्र किनारे गीली रेत पर पांव रखना अच्छा लगता है. याद करना, remember, याद करना, याद करना, remember. मुझे कुछ याद नहीं है. I don't remember anything. मुझे कुछ याद नहीं है. पकड़ना, hold, पकड़ना, पकड़ना, hold. एक हाथ से गमला पकड़ना खतरनाक है. It's dangerous to hold a vase with one hand. एक हाथ से गमला पकड़ना खतरनाक है. Shopping cart, shopping cart, shopping cart, shopping cart, shopping cart. Shopping cart खाली है. The shopping cart is empty. Shopping cart खाली है. Plastic bag, plastic bag, plastic bag, plastic bag, plastic bag. किराने का सामान खरीदते समय प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े की थैली का उपयोग करें. While grocery shopping, use cloth bag instead of plastic bags. किराने का सामान खरीदते समय प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े की थैली का उपयोग करें. हास्य, कॉमेडी, हास्य, हास्य, कॉमेडी. वे लोग एक हास्य कार्यक्रम देखकर हंस रहे हैं. They're watching a comedy program and laughing. वे लोग एक हास्य कार्यक्रम देखकर हंस रहे हैं. उपन्यास, नॉवेल, उपन्यास, उपन्यास, नॉवेल. इस उपन्यास में कटाक्ष कभी-कभी बहुत सच लगता है. The sarcasm in this novel is very real at times. इस उपन्यास में कटाक्ष कभी-कभी बहुत सच लगता है. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hindipod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Alvida! In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Hindi. Hi everybody, my name is Akansha. Welcome to the 800 Core Hindi Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hindi. But there's a twist. With each new lessons in the series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hindipod101.com. Click the link in the description to access more example sentences,
create your own flashcard deck, and finally master Hindi. Okay, let's get started. First is cocoa, 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 cocoa. एक प्याली गर्म कोको सर्दी की ठंडी रात में आराम पहुंचाती है. A warm cup of cocoa is comforting on a cold winter night. एक प्याली गर्म कोको सर्दी की ठंडी रात में आराम पहुंचाती है. शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, शीतल पेय, शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक. कोला, सोडा, बर्फ वाली चाय और स्वाद युक्त पानी कुछ आम शीतल पेय हैं. Some common soft drinks are colas, sodas, iced tea and flavored water. कोला, सोडा, बर्फ वाली चाय और स्वाद युक्त पानी कुछ आम शीतल पेय हैं. रस, जूस, रस, रस, जूस. फलों का रस ऊर्जादायक पेय से बेहतर होता है. Juice is better than energy drinks. फलों का रस ऊर्जादायक पेय से बेहतर होता है. किताबों की अलमारी, बुक शेल्फ, किताबों की अलमारी, किताबों की अलमारी, बुक शेल्फ. किताबों की अलमारी किताबों से भरी हुई है. The bookshelf is full of books. किताबों की अलमारी किताबों से भरी हुई है. बिस्तर, बेड, बिस्तर, बिस्तर, बेड. उसने अपना बिस्तर ठीक किया. He made his bed. उसने अपना बिस्तर ठीक किया. आईना, मिरर, आईना, आईना, मिरर. आईना दीवार पर लटका हुआ है. The mirror is hanging on the wall. आईना दीवार पर लटका हुआ है. ड्रेसर, 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 ड्रेसर. छोटी बच्ची हमेशा सोचती थी उसकी माँ के ड्रेसर के ऊपरी दराज में क्या रखा है. The little girl always wondered about the contents of the top drawer of her mom's dresser. छोटी बच्ची हमेशा सोचती थी कि उसकी माँ के ड्रेसर के ऊपरी दराज में क्या रखा है. झाड़ू लगाना, स्वीप, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, स्वीप. कितनी धूल है, फर्श पर झाड़ू लगाओ. It's so dusty, sweep the floor. कितनी धूल है, फर्श पर झाड़ू लगाओ. रखना, put away, रखना, रखना, put away. मैंने बर्तन रख दिए. I put away the dishes. मैंने बर्तन रख दिए. पोछा करना,
mop, पोछा करना, पोछा करना, mop, मैंने जूस गिराया है इसलिए मैं फर्श पर पोछा करूंगा. I spilled the juice so I'll mop the floor. मैंने जूस गिराया है इसलिए मैं फर्श पर पोछा करूंगा. Waitress, 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 waitress. वेट्रेस के हाथ में एक ट्रे है जिसमें गिलास रखे हैं. The waitress is holding a tray with glasses. वेट्रेस के हाथ में एक ट्रे है जिसमें ग्लास रखे हैं. Fahrenheit, 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 Fahrenheit. पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है. Water freezes at 32 degree Fahrenheit. पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है. तापमान, temperature, तापमान, तापमान, temperature. भूमंडलीय ऊष्मीकरण से पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव पड़ेगा. Global warming will have an impact on Earth's temperature. भूमंडलीय ऊष्मीकरण से पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव पड़ेगा. नम, humid, नम, नम, humid. आज मौसम बहुत गर्म और नम है. It's very hot and humid today. आज मौसम बहुत गर्म और नम है. तेज हवा, windy, तेज हवा, तेज हवा, windy. कल ठंड होगी और तेज हवा चलेगी इसलिए एक स्कार्फ बांध लेना. Tomorrow will be cold and windy, so wear a scarf. कल ठंड होगी और तेज हवा चलेगी इसलिए एक स्कार्फ बांध लेना. खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, खेल का मैदान, प्लेग्राउंड. क्या खेल के मैदान में स्लाइड भी है? Is there also slide on the playground? क्या खेल के मैदान में स्लाइड भी है? पूल, 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 पूल. लाइफ गार्ड पूल पर नजर रख रहा है. The lifeguard is watching the pool. लाइफ गार्ड पूल पर नजर रख रहा है. टेनिस, 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 टेनिस. टेनिस की दुनिया में वह तेजी से उभर रहा है. He is emerging fast in the world of tennis. टेनिस की दुनिया में वह तेजी से उभर रहा है. बास्केटबॉल, 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 बास्केटबॉल. बास्केटबॉल के ज्यादातर खिलाड़ी लंबे होते हैं. Most basketball players are tall. बास्केटबॉल के
ज्यादातर खिलाड़ी लंबे होते हैं। लीटर, 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 लीटर। आपने कितने लीटर दूध खरीदा? How many liters of milk did you buy? आपने कितने लीटर दूध खरीदा? Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hindipod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Alvida. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Hindi. Hi everybody, my name is Shakti. Welcome to the 800 Core Hindi Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hindi. But there is a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hindipod101.com. Click the link in the description to access more example sentences. Create your own flashcard deck and finally master Hindi. Okay, let's get started. First is chawal, rice. Chawal, chawal, rice. चावल को पीसकर डोसा बनता है. डोसा is made from powdered rice. चावल को पीसकर डोसा बनता है. डबल रोटी, ब्रेड. डबल रोटी, डबल रोटी, ब्रेड. सफेद डबल रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. White bread is not healthy for you. सफेद डबल रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. अंडा, एग. अंडा, अंडा, एग. मैंने नाश्ते में अंडा खाया था. I had an egg for breakfast. मैंने नाश्ते में अंडा खाया था. नूडल, 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 नूडल. इंस्टेंट नूडल्स एक प्रसिद्ध हल्का भोजन है. इंस्टेंट नूडल्स आर अ पॉपुलर लाइट मील. इंस्टेंट नूडल्स एक प्रसिद्ध हल्का भोजन है. अलार्म घड़ी, अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी, अलार्म क्लॉक. अलार्म घड़ी को सुबह 5 बजे के लिए सेट किया गया है. The alarm clock is set for 5 a.m. अलार्म घड़ी को सुबह 5 बजे के लिए सेट किया गया है. दरवाजा, डोर, दरवाजा, दरवाजा, डोर. कृपया दरवाजा बंद कर दें, बाहर काफी शोर है. प्लीज क्लोज द डोर, इट इज लाउड आउटसाइड. कृपया दरवाजा बंद कर दें, बाहर काफी शोर है. रिमोट कंट्रोल,
remote control, remote control, remote control, remote control. कृपया मुझे रिमोट कंट्रोल दीजिए. प्लीज पास मी द रिमोट कंट्रोल. कृपया मुझे रिमोट कंट्रोल दीजिए. पोंछना, वाइप, पोंछना, पोंछना, वाइप. फर्श पोंछना मत भूलना. Don't forget to wipe the floor. फर्श पोंछना मत भूलना. Menu, 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 menu. क्या मैं मेन्यू देख सकता हूं? Can I see the menu please? क्या मैं मेन्यू देख सकता हूं? पत्रिका, मैगजीन, पत्रिका, पत्रिका, मैगजीन. क्या आप कुछ पत्रिकाएं पढ़ना पसंद करेंगे? Would you like to read some magazines? क्या आप कुछ पत्रिकाएं पढ़ना पसंद करेंगे? ऑडियो बुक, ऑडियो बुक, ऑडियो बुक, ऑडियो बुक, ऑडियो बुक. मैं काम पर जाते समय ऑडियो बुक सुनती हूं. I listen to audiobooks during my commute to work. मैं काम पर जाते समय ऑडियो बुक सुनती हूं. वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम. इस सप्ताहांत में एक नया वीडियो गेम खरीदने वाली हूं. I'm going to buy a new video game this weekend. इस सप्ताहांत में एक नया वीडियो गेम खरीदने वाली हूं. सस्ता, चीप, सस्ता, सस्ता, चीप. कभी कभी समुद्र से सफर करना सबसे सस्ता विकल्प होता है, भले ही इसमें ज्यादा समय लग जाता है. To travel by sea is sometimes the cheapest option, even if it takes a longer time. कभी कभी समुद्र से सफर करना सबसे सस्ता विकल्प होता है, भले ही इसमें ज्यादा समय लग जाता है. महंगा, एक्सपेंसिव, महंगा, महंगा, एक्सपेंसिव. यह थोड़ा महंगा है. That's a little expensive. यह थोड़ा महंगा है. दयालु, काइंड, दयालु, दयालु, काइंड. मेरी शिक्षिका बहुत दयालु है. My teacher is very kind. मेरी शिक्षिका बहुत दयालु है. डरावना, स्केरी, डरावना, डरावना, स्केरी. वह उस मुखौटे को पहनकर डरावना दिखता है.
He looks scary when he wears that mask. वह उस मुखौटे को पहनकर डरावना दिखता है. आरामदेह, relaxing. आरामदेह, आरामदेह, relaxing. मालिश बहुत आरामदेह होती है. Massages are very relaxing. मालिश बहुत आरामदेह होती है. Pound, 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 pound. 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है. 1 pound equals approximately 450 grams. 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है. मील, माइल, मील, मील, माइल. 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है. 1 mile is roughly 1.6 kilometers. 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है. फुट, 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 फुट. 1 फुट में 12 इंच होते हैं. There are 12 inches in a foot. 1 फुट में 12 इंच होते हैं. Well done. In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hindipod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Alvida. Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is input versus output and how to learn language faster. Are you getting results from your language learning? You may be spending time on apps, watching YouTube videos, maybe even reading through a textbook, getting all this input. But what about output? Do you know what you're getting out of it? Most learners don't. Stick around. Today you'll discover 1. The other meaning of input versus output. 2. How tracking your input and output helps you learn a language faster. And 3. How to apply this tactic. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Talking About the Week PDF Conversation Cheat Sheet. Learn how to talk about your plans for the week and how to say the days of the week in the target language. Download this cheat sheet for free. Second, the Daily Conversations Infographic ebook. You'll learn over 100 conversational phrases with this new PDF ebook. And third, How to Say Hello PDF Writing Workbook. With this printable PDF, you'll pick up some common greetings and be able to practice writing them out. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Now to today's topic. Input versus output and how to learn language faster. Part 1. Input versus output. So there are two ways to define input and output.
First, from the language learning perspective, input is listening and reading, and output is speaking and writing. The second way to look at it is the effort you put in and the results you get. So input is the time and effort you put into learning the language, like listening to audio lessons for 5 hours a week, and 5 hours is your input, or practicing speaking phrases out loud for 10 minutes a day. And output is the return on the time you invested into the language. In other words, the results. The results could be something like mastering 30 phrases or being able to hold a 3-minute conversation as a result of your input. And that's the input and output we want to focus on today, the time put in and the results you get from the time put in. Part 2, how tracking your input and output helps you learn a language faster. If you take a look around, most learners do a ton of info with studying, right? They read textbooks, they watch videos on YouTube, they spend hours on apps, but they have no measurable results or return on their time invested. If someone told you that they've read 200 pages of a textbook, which is a lot of input, can they place a specific number on their results? Can they say, I learned 1,000 words, or I can handle 20 minutes of conversation as a result of reading 200 pages? Probably not. So most learners don't know because most learners don't measure their input or their output. However, if you knew that listening to 1 hour of audio lessons a week resulted in being able to hold a 3-minute conversation, now you know what results you're getting from your work. And this is where tracking your input and output becomes a powerful way to learn a language faster. Because you can measure your input and output, you can also now improve your results. If 1 hour of input helps you have a 3-minute conversation, you now know how to reach 6 minutes, 9 minutes, and so on. You know how to improve, just add an hour more. Look at it in another way. You can also try to get more output while maintaining your input, 1 hour. So trying to get 7 or 8 minutes of conversation from 1 hour of study time. Now, the numbers may not always be the same because of the law of diminishing returns. But what's important to understand is that if you're putting in effort, you should always aim to get some sort of result in return. Otherwise, you're not making progress. That's why this tactic is so powerful. It almost forces you to improve and get something out of your efforts by looking for ways to beat your current numbers. But if you never knew the numbers, then you wouldn't know what your baseline was and you wouldn't know how to improve. Now, how do you apply this to your language learning? Part 3. How to apply this tactic. It's not hard. Just measure your input or the time you study. We already ask you to set small, measurable monthly goals and outline your daily routines. This should give you an idea of how much time you put in already. Plus, our learning system tracks the time you study. Just visit My Report under the Account drop-down menu. There, you'll see the number of lessons completed, flashcards reviewed, and time studied. Next, measure your results, or your output. You have to start doing output, whether it's a journal, texting your teacher, writing comments on our lessons, having conversations. You have to have that output and measure it. So if your goal is to learn 1,000 words in 1 month, but you only learned 800, then you know that with your current input, 800 is a realistic number. 1 month results in 800 words mastered. And because you know this, you can now improve by doubling your input or changing to a more efficient study method, like learning with flashcards. Simply put, measure your time input and measure your output. And again, to measure the output, you have to do the output. You'll instantly see what results you're getting for the time spent. Thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about, are you putting enough hours into your language? If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Picture this. You're sitting with 2 native-speaking friends who are speaking in that language. Maybe you understand a word here and there, but the rest is way too fast for you. If only you could slow down and replay that conversation bit by bit. And if only you had a transcript and translations, then you'd understand everything and learn the language faster. Well, the good news is you can do just that. Slow down and understand native speed conversations, even if you're a beginner, with our learning system. How?
Stick around. Today, you'll discover 1. All about the line-by-line dialogue study tool. 2. How you can easily understand and master conversations as a beginner. And 3. How this tool gets you speaking easily and helps perfect your pronunciation. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. So let's jump in. I'll guide you through our learning system so you get to see exactly what's inside and our members-only study tools. Okay, so let's take a look at what exactly the line-by-line dialogue tool is. So first, you can find the line-by-line dialogue tool in any of our lessons. In this case, I have Beginner Season 1, and the lesson title is How's It Going? And you can find the line-by-line dialogue tool here from the Dialogue tab. If you click this, it will take you directly to the line-by-line section. So I'm going to break down what you can do here in just a moment, but you can also find the line-by-line dialogue tool in any of the Absolute Beginner lessons. So we have this free Absolute Beginner course that's available for a limited time right now. There are more than 50 lessons that you can find inside this Absolute Beginner course. So you will also have access to the line-by-line dialogue tool if you take this course and get access to these lessons. So have a look at that too if you're interested in that. Okay, so let's take a look at what we can do with the line-by-line dialogue tool. So first you'll notice that there are a couple of icons to the left of each line. So each line here represents one line in the dialogue for that lesson. If you press the speaker icon here on the left, it says play, you will hear just that line. So you'll be able to listen to just that line. This is useful if there's like a line in the dialogue that you had trouble understanding or that wasn't super clear to you, or maybe you want to practice shadowing that line, whatever. You can choose just that one line to listen to. So each line also has, of course, the words. You'll have a transcript here of what was said in the line, and then depending on the language that you're studying, you will also have a translation here too. So it can be a translation in your language or in a language that you know, another language you already know. If that is available for the language you are studying, you will also find that here. So the second thing I want to talk about is this voice recorder function, this icon right here. If you click on this, you will be able to record your voice saying the line. So this is really helpful if you want to work on your pronunciation, because by recording your voice, you get the opportunity to compare your pronunciation with the pronunciation of a native speaker. So this can really help you to make sure that you are pronouncing the words correctly and also using natural intonation. This is super helpful in longer lines like this one, for example. So if you want to make sure that your intonation sounds natural and sounds like a native, you can use this voice recorder feature to make sure that you're doing that correctly. And you can use this 4, 5, 6, 10 times if you want to. It's not just like a one-time thing. So use this, come back to this to make sure that you are getting enough practice with your speaking as well. So you can use this tool, just this tool, for listening practice, for speaking practice, and you can even write these things out if you want in a notebook to get some writing practice too. So there are a lot of different ways that you can use just this dialogue tool to get lots of kinds of practice. And if you want to break this down even further, if you want to break things down a little bit more to more like specific pieces, you can even scroll down to the vocabulary section where you can look at those specific words and specific phrases in depth and listen to them a little bit more slowly to practice too. So there are a lot of different ways that we can use this dialogue tool, just this dialogue tool, to make sure that we have lots of different ways to practice. And if you want to just listen to the entire conversation one more time, you feel pretty confident with the line-by-line practice, you can just come up here and push this play button and you will hear the entire dialogue one more time. If you struggle with understanding conversations in your target language, you'll want this. The line-by-line dialogue breaks down conversations into individual lines, and you'll understand every word of the lesson dialogue. Find it inside all of our audio lessons. So, if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.